Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you're all doing well. Let's start our today physics topic, chapter number 13, sound. And the topic is characteristics of sound. And the diary is from 51 page to 52, short questions, CRQ and CQ. Topic is loudness, which has already started in the previous lecture. So we will start the factor on which the loudness can be affected. The first factor is amplitude of a vibrating body, other is area of a vibrating body, and third one is the distance from the vibrating source. Before discussing the amplitude of a vibrating body as a factor of the loudness, we have to know about the amplitude. That what is amplitude? So amplitude is basically the maximum displacement of a vibrating body from the mean position to its extreme position. तो एक वाइब्रेट करते हुए ऑब्जेक्ट का अपनी रेस्ट पोजीशन से अपने मैक्सिमम हाइट या लोएस्ट हाइट पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका लाउडनेस भी इंक्रीज हो जाती है. सो वी कैन से दैट लाउडनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड. As the amplitude of an object of a vibrating body is increases, then the loudness will also be increased. And similarly, if the amplitude is decreasing, the loudness will also be decreased. So we can consider an example of a drum or a guitar. If the strings of the guitar are plucked forcefully with a greater amplitude, obviously the loudness will be higher or the loud sound will be listened as compared to the guitar whose strings are plugged with the smaller chords. Similarly, we can discuss the example of a drum. If the drum are strike forcefully or a drum is strike with a smaller force, then the forcefully the drum which are strike with the forcefully much has a higher amplitude, so the loudness will be higher. We can see it from the diagram figure 13.7. Variation of the loudness will amplitude. When the amplitude is larger, then the sound will be loud, and when the amplitude is smaller, the sound will be quiet or smaller loud. The other factor is the area of a vibrating body. Now the loudness is also depend upon the area, and it also is directly relating with the area of the vibrating object. If the area of an object is smaller, the loudness of the sound will also be smaller or lower as compared to the larger area of a drum. We can consider the example of a drum. Let's consider two drums. One has a larger membrane or surface area, and other one has a smaller surface area or membrane. Both the drums are struck with the same force, but the larger area drum has a louder sound because loudness is depend on the area. Similarly, we can consider the example of tuning fork. So in this way, the loudness is directly relating with the area of a vibrating body. The third factor is distance from the vibrating body. So if the distance is increases, the loudness will be decreased because they both are inversely relating with each other. We can consider the example of a teacher that are delivering a lecture in a class. So the front bencher students will listen the sound much louder as compared to the back bencher because the students which are sitting at front has a smaller distance from the teacher as compared to the student that are at the back bencher has a greater distance from the teacher, so they listen the lower sound or lower loud sound as compared to the front bencher. Similarly, another factor we have on which the loudness is affect, that is the physical condition of the air. तो कुछ लोगों में हमारी एयर की हेल्थ अच्छी होती है और कुछ में अच्छी नहीं होती. मतलब एज के साथ साथ हमारे ऑर्गन्स की जो हेल्थ होती है वो कम होना शुरू हो जाती है. तो इसीलिए अगर तो एयर बहुत सेंसिटिव है तो उसकी लाउडनेस एग्जैक्ट आपको वही सुनाई देगी जो उसकी असल में होगी. लेकिन इसी तरह अगर एयर की हेल्थ अच्छी नहीं है तो हमें लाउडर साउंड भी फेंट होकर सुनाई देगी. इस चीज़ को हम देखते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर पे. ये फोर्थ फैक्टर है जिस पे हमारी लाउडनेस डिपेंड करती है. नेक्स्ट, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी लाउडनेस और उसके सारे फैक्टर्स. लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं. नेक्स्ट अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो है पिच. पिच किसे कहते हैं? पिच साउंड की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम किसी भी बारीक और मोटी यानी श्रिल और ग्रेव इन दोनों साउंड में डिफरेंस कर सकते हैं. और इसकी एग्जांपल में हम यही देखेंगे कि जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा श्रिल होती है एज़ कम्पेयर टू द मैन. This is because of the pitch. So pitch is also related with the frequency. Here is the short question we can mark. What is the relationship between the frequency and the pitch? So we can see it from this diagram 13.8. The pitch and frequency are directly relating with each other. If the frequency is higher, then the pitch will be higher, and if the frequency is lower, then the pitch will also be lower. So the girls, women, and children
has the higher pitch, so their frequency is also higher as compared to the denser men's. Exercise question, short question 13.380 is on the page number 51. Loudness define and all the factors on which the loudness is depend. लाउडनेस के फैक्टर्स के नाम लिखेंगे जस्ट लाइक एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग सोर्स एंड द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एयर। उसके बाद नेक्स्ट कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन पेज नंबर 50, स्पीड ऑफ साउंड, कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा। CRQ, फर्स्ट CRQ में आपसे पूछ रहे हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क पे जब हम यूज़ कर ट्यूनिंग फॉर्क को जब वुडन पैड पे यूज़ करती हैं वुडन टेबल पे तो उसकी लाउडनेस इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी रीज़न यही है कि वुडन टेबल पे हमारा जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से लाउड साउंड प्रोड्यूस होंगी। और सेकंड वन, बेल जार एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एयर को निकालने से रिमूव करने से पीछे क्या इफेक्ट होते हैं। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव होता है कि द साउंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, इफ देयर इज अ no medium the sound will not be travel or propagate. So if the sound is removed from the jar we will not able to listen any sound because the particles were not present to carry the vibrations from the bell jar to our ear. So we have to note these questions and अपनी कॉपी पे होमवर्क करना है इन क्वेश्चंस का। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।